Well, let's quickly take a look now at what the big focus of this program really is. We are looking at the survivors, those who have come out of COVID successfully. But before we get to them, let's put this in perspective. Now, lockdown 4 ends on Sunday. This is how each phase has played out. So far, lockdown 4 has been the shortest, 11 days till now. It's got 67,400 cases, the most, and pushing the total number of cases in India to 1.5 lakhs. In contrast, lockdown 1, which was 21 days, saw about 10,800 new cases. The deaths get a bit more complex. The number of deaths is the highest in the last phase, but the death rate has actually fallen from about 3.3% in the first two phases to 2.5%. The challenge is to hold this and to reduce it further. Coming to tests, India is testing a lot more. Over 1 million tests have been conducted each in the last two phases, way more than the first two phases when the tests were still being scaled up. However, the positivity rate, in other words, the number of positive cases versus the tests conducted, has risen from 4.7% in the first phase to over 6% now. And this is actually important because, as experts have pointed out, the more the tests are, the more tests that need to be conducted in order to find and isolate the virus in India. So India's recovery rate is improving. It was 30 days before the 28th of April at 23.4%. 20 days before it was on the 8th of May at 29.4%. 10 days back on the 18th of May it was at 38.3%. And today on the 28th of May it's at 42.8%. So that's really important. The recovery rate is going up sharply, and that really is what we are looking at on this program. Joining us, Dr. Muzaffar Lagdawala. He's a laparoscopic surgeon in Mumbai. He's volunteered with the Brihan Mumbai Municipal Corporation, is running the NSCI Dome facility at Worli. Thank you, sir, very much for being with us. We're also joined by Manoj Pawar. He's recovered from COVID. Bharti Utekar, also a COVID recovered patient. Swarup Dikshit and Dr. Tausif Khan, all of them have actually gotten better. That's great to know. But first, let me go across to Dr. Lagdawala. Sir, is there anything encouraging at the end of the day? Because the overall numbers, particularly in Maharashtra where you are absolutely formidable. We've got all of these cases of bodies being piled on, reports that hospital beds are not available in the numbers that we would ideally like them to be available in. And yet you've got these other numbers emerging that in fact the death rate is not that bad in India. In your opinion, sir, is this a glass half empty or a glass half full in terms of fighting COVID in India? Vishnu, I would always like to see the glass half full, and as a doctor I would say that that's how it is. This is a pandemic of enormous proportions, and what I would like to say is that despite the numbers increasing, we do know that more than 80 to 85% of these patients are asymptomatic. The other encouraging figures are that our recovery rates, at least at NSCI, and hopefully you'll get the numbers from Mumbai and various other places soon enough, are that we've got around more than a 45 to 50% recovery rate. So that's encouraging. We've also had people who are 94 years of age, someone who's 2 months of age, all recovering, people with comorbidities, people with cancer. So these are all encouraging signs. I do understand that the enormity of and the magnanimity of the population in Bombay, you are going to see scenes where dead bodies are lying up, and that's happened across the globe. You've seen it in New York, you've seen it in Spain, in Italy. So that's just the volume that is any hospital has to face. So I think the good side is that we have around a 45 to 50% recovery, and hopefully we should get better and better in Mumbai, and hopefully we should peak. I believe we are around there, maybe another week or two from there, and then start plateauing off and going down. Okay. Manoj Pawar is 35 years of age. He was discharged on the 27th of April after having recovered from COVID. Manoj, what were your symptoms when you started feeling unwell? मनोज जी, सुनाई दे रहा है आपको? आवाज कम आ रहा है? नहीं मनोज जी, मैं सिर्फ आपको ये पूछ रहा था कि आपके सिम्टम्स क्या थे जब आप वो कोविड टेस्ट के लिए गए थे? आपका क्या सिम्टम्स थे? एक्चुअली सर, सिम्टम्स वैसे कुछ नहीं था. आई एम टोटली हेल्दी. आई वाज हेल्दी. उसके बाद जो हमें कोविड का टेस्ट करने के बाद पॉजिटिव आया. पॉजिटिव करने के बाद हमें
उधर हॉस्पिटल पहले लेके गए। उधर हॉस्पिटल के बाद हमें NSCI डोम हॉल में शिफ्ट किया गया। वहां जो एक्सपीरियंस था बहुत ही अच्छा था। वहां का एक्सपीरियंस, सभी डॉक्टर्स जो थे, डॉक्टर लकड़ावाला के अंडर में जो जो डॉक्टर्स थे, उनका एक्सपीरियंस हमें बहुत अच्छा लगा। और मेन क्या है, ये जो कोरोना है, वो कोरोना से कोई डरना नहीं चाहिए। जितना हमें फियर पैदा होगा उतना हम लोग डर जाएंगे। और लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले मुझे भी डर लगता था। जो हम लोग न्यूज सुनते हैं, ऐसा होगा, इतने लोग मर गए वगैरह वगैरह, लेकिन एक्चुअल में होने के बाद जब मैं वहां पे गया तो ऐसा कुछ फील ही नहीं हुआ कि कोविड-19 मुझे हुआ है करके। पर मनोज जी ये वहां का बताइए, आप एक्सपीरियंस एकदम एसिम्प्टोमेटिक थे, मतलब आपके कोई सिम्टम्स नहीं थे, सिर्फ ये नहीं टेस्ट, थे। तो आप टेस्ट क्यों किए फिर? मैं एक्चुअली फैमिली में एक को एडमिट किया था, ओह आई सी। रिगार्डिंग बिकॉज ऑफ दैट मैंने किया था। ओके, एंड यू टर्न्ड आउट टू बी एसिम्प्टोमेटिक। और आप हॉस्पिटल में कितने दिन के लिए थे? हॉस्पिटल में नियर अबाउट 20 डेज था। जी, 20 हाँ, डेज। और फिर लेकिन क्या एक वो रिलीज के पहले एक टेस्ट था या दो टेस्ट थे जिसके रिजल्ट के बाद आपको छोड़ा गया? एक्चुअली कुछ टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। उसके बाद सेकंड टेस्ट जो लिया उसका निगेटिव आया। यानी जो Okay. फर्स्ट टेस्ट लिया था राइट आफ्टर एडमिशन, राइट। उसका रिजल्ट नहीं आया था। यानी उसका टेस्ट का रिजल्ट नहीं आया। तो उसके बाद आफ्टर 7 डेज उनका लिया तो वो आ गया। Okay. यानी 12 डेज में एक्चुअली रिकवरी हो गया था। 12 डेज के बाद डिस्चार्ज मिला। Right. So we are also joined by Bharti Uttekar. She is 59 years old, also treated at Yeah. Dr. Lakdawala's hospital and is now okay. भारती जी, आप मतलब आपके सिम्टम्स क्या थे? डॉक्टर्स ने क्या बताया आपको? टेम्परेचर था आपका? आप हॉस्पिटल में कब भर्ती हुई? ऐसा नहीं था साहब। जब लड़का हॉस्पिटल में काम करता था ना, तो उसको थोड़ा दिखाया थे, मतलब चेकअप किया तो बोला उसको क्वारंटाइन रहना पड़ेगा। फिर मेरा लड़के ने PMC में कॉल करके हम लोग का भी चेकअप करवाया। जी। तो हम लोग का पॉजिटिव दिखाया तो हम लोग को क्वारंटाइन उधर किए थे केदार हॉस्पिटल में। केदार हॉस्पिटल से तो जी भारती जी, आपका वो फोन लाइन, वो लाइन थोड़ा खराब है, ढंग से सुनाई नहीं दे रहा है। बट लेट मी गो अक्रॉस टू डॉक्टर तौसीफ खान. ही इज कोविड रिकवर्ड. ही इज ऑल्सो अ प्लाज्मा डोनर. डॉक्टर खान, not only are you in a position to help, not only are you somebody who's recovered, but you're also in a position to help others as being a plasma donor. That must feel very good, that you know your experience, you've come through with all of this and you're now helping others. Tell us a little bit about how the process of donating plasma actually happens. जब भी कोई पेशेंट कोरोना वायरस डिजीज से रिकवर हो जाता है और उनका होम क्वारंटाइन पूरा होता है, अगर वो फिजिकली फिट है पूरी तरीके से तो प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। हम उनका दोबारा टेस्ट करते हैं। टेस्ट उनका अगर सब ठीक है, सारे पैरामीटर ठीक है, तो फिर हम उनका दोबारा टेस्ट करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तो फिर हम उनका प्लाज्मा लेते हैं। डॉक्टर खान, हाउ डिड यू, और पेनलेस प्रोसीजर जी डॉक्टर खान, ये मतलब ये कोविड हुआ कैसे आपको? आप पीपी नहीं पहन रहे थे या वो उसमें कोई प्रॉब्लम्स थे, या नहीं, आपका कोई आइडिया है हाउ यू गॉट इट? हैव यू गॉट एनी आइडिया हाउ यू गॉट इट? नहीं, पीपी हम लोग पहनते हैं जब भी हम लोग किसी पॉजिटिव पेशेंट के टच में होते हैं। अगर उनकी स्क्रीनिंग करनी होती है, उनका एग्जामिनेशन करना होता है, तो हम लोग पीपी पहनते हैं। लेकिन देखिए, पीपी भी 100% सेफ नहीं होता है, थोड़ा सा रिस्क तो बना रहता है, और इसी से पेशेंट के स्क्रीनिंग के टाइम पे मुझे हुआ। ओके, and Swarup Dixit also joins us now. Swarup जी, आप जब हॉस्पिटल में थे आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? जब भी मैं हॉस्पिटल में था, मेरा एक्सपीरियंस नर्स, स्टाफ और डॉक्टर के साथ बहुत अच्छा था, क्योंकि बाकी लोग तो कोविड पेशेंट कह के मुझसे 3-3.5 मीटर से ही दूर से ही भाग जाते थे, पर जो डॉक्टर्स थे वो और नर्सेस हमारे पास आकर हमारा पूरा ट्रीटमेंट, इलाज कर रहे थे, और बाकी सब दवाई, खाना और पीने के लिए पानी, ये सब अच्छे से ख्याल रख रहे थे। तो मेरा बहुत ही प्लीजेंट और बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा हॉस्पिटल में।
स्वरूप जी, ये बताइए, जब आप हॉस्पिटल से बाहर निकले तो मतलब आप जहाँ रहते आसपास में आपके जो नेबर्स हैं वो लोग क्या कह रहे थे कि इनसे दूर रहिए, रहो, पता नहीं इनके पास ये कोविड के पेशेंट है, मतलब ये कोई स्टिग्मा अटैच था? मतलब आपको कोविड हुआ था इसलिए? एक्चुअली हाँ, ये स्टिग्मा अभी भी हमारी सोसाइटी में है, क्योंकि आने के बाद 14 डेज तक तो मैं क्वारंटाइन ही था। पर उसके बाद भी मैंने महसूस किया कि जब भी इंटरेक्शन होता था, उन्हें जब भी पता चलता था कि आई वॉज कोविड पॉजिटिव, तो वो थोड़ा झिझक के बात करते थे। तो ये स्टिग्मा हमें मिटाने की जरूरत है, और अभी भी सोसाइटी में ये स्टिग्मा है। Dr. Lakdawala, that is a problem, isn't it? You know, people recover, our recovery rate isn't bad at all, and then they return to societies and homes where people look upon people who come out of COVID as, oh, should I talk to them, should I be close to them, because you just don't know any better. Isn't that a big problem, stigma? I think stigmatization is killing more people and destroying people mentally rather than physically. And that's one thing that Vishnu, we need to send this message out to people, that people are not going to die. They die mentally because you treat them like retards, and you almost treat them like lepers. And that's what we do is we put a hand on people and they just feel so comfortable. We tell them, you're not going to die. Trust us. We will try our best to save you. We put people on oxygen. When they panic, most of the times it is panic. When we look at their oxygen saturations, it's pretty normal. So the best thing we can do in isolation centers is to comfort these patients. What we do in ICUs is besides the point, because those are the patients who need absolute care. But isolation centers, I think what is killing them is mental rather than physical things. All right. Well, thanks, Dr. Lakdawala, and thank you to all of our guests tonight, all of whom are feeling well now and happy enough to be on this program. I think the message is this: if you do get COVID-19, chances are you will recover. So let's not be entirely negative about this. It's time for this short break.